Hello and welcome to yet another episode of this beautiful series, the season 2 of Prime Volleyball League. And with us today we have the General Manager of Bengaluru Torpedoes, Mr. Rakesh Haridas. Thank you so much, sir. Thank you. And of course, the captain of Bengaluru Torpedoes, Pankaj Sharma. Thank you so much for joining, Pankaj. My first question to you, sir, would be: you're one of the very few teams in the league to have actually gone ahead with a foreign coach, and that too in a celebrated athlete like David Lee. What was the rationale behind it for Prime Volleyball League? Why a foreign coach and why David? One, David was a Prime Volleyball League legend. I mean, he was in India for 2 years, one with the previous edition and with the first edition of Prime Volleyball League. So everybody knows about him, knows what he's capable of. So it was a no-brainer for us because as the Torpedoes, we've always dreamt of setting benchmarks or maintain a certain professional standard. So I'm not saying that any of the other coaches doesn't have it, but we wanted to set a different pathway by getting David and implementing a different coaching methodology. So that was the thought process, and it was the first choice, and we got to know that he was stopping his playing career. He was retiring, and this was a new exciting option for him, and we're friends, now we've become family. That's so nice to hear, sir. Pankaj bhai, your second season with Bengaluru Torpedoes, आपको जब पता चला कि आप second season भी Bengaluru Torpedoes के साथ रहेंगे, तो आपको कैसा लगा और आपका इनिशियल रिएक्शन क्या था? फर्स्ट रिएक्शन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था क्योंकि मुझे फर्स्ट सीजन में बेंगलुरु टॉर्पेडोज में था, तो उस टाइम मुझे इतना एंजॉय हुआ कि मुझे ये फैमिली की तरह लगा, एक फैमिली की तरह। और इस सीजन में जब मेरे को रिटर्न दिया तो मुझे एक बात ही पता लग गया था कि डेविड ली कोच है, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। एक इतने बड़े प्लेयर है और साथ में हमारी टीम के कोच है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। एकदम बहुत सही। Sir, the next question that I would want to throw. Last season we had this league in just one city inside a bio bubble. That to season 2 we are having it in across 3 cities with no bio bubble. So how difficult was the task for you as a general manager to kind of manage the workload and all the other things that go with non-bio bubble tournament? Oh, it was huge. It was huge considering we started off the season 2 in Bangalore. So it was tough, but obviously we have a team, backed by everybody. So we sort of managed, and it is an exciting season for everybody because the biggest, story of this season was the fans are back. Absolutely. Right. So the fans get to see what we are putting out there, and it was just, still remember the first day against the Thunderbolts. It was just, we're so happy to play in front of the home crowd. Right. And that is the reaction because it was just amazing. All 3 cities have been great in terms of support, fans enjoying the show, the players feeding off that energy. So it's kind of superb that way. And if you're motivated by that, then all of the work is just piece of cake. Yeah. It just happens. Absolutely. Pankaj bhai, खाली 3 टीमें अपना होम क्राउड के साथ खेल पाए, मतलब सामने खेल पाए। बेंगलुरु was one of them. कैसा लगा बेंगलुरु के सामने, बेंगलुरु के साथ खेलने के लिए? होम स्पोर्ट किसी भी टीम को मिले तो अच्छा लगता है, एक अलग से एनर्जी आता है खेलने का। तो यहाँ पे हमारे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, पर हम कुछ मिस्टेक की वजह से 2 मैचेस लूज कर दिए, पर हमने फिर उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जिस पे हमारा ज़्यादा मिस्टेक हो रहा था। कोचेज़ ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाया, जहाँ पे हमारा मिस्टेक था उसके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस किया, तो हम 3rd मैच विन किया और फैंस भी खुश हुआ। फैंस को खुश करवा के आया हम लोग से एकदम। आप हम लोग देखे थे कि आप लोग का टर्न अराउंड बहुत अच्छा था, मतलब स्लो स्टार्ट हुआ पर आप लोग चेंज कर दिए पूरा गेम बाय प्लेइंग अ वेरी एक्साइटिंग गेम प्ले। सो व्हाट कैंप के इनसाइड क्या हुआ था? मूड कैसे चेंज हो गया कि मतलब ऑन कोर्ट परफॉर्मेंस एकदम से पूरा चेंज हो गया? ये मैं पूरा श्रेय कोच को देना चाहता हूँ, क्योंकि कोच ने सभी प्लेयर को मोटिवेट किया है और कभी किसी प्लेयर पे गुस्सा नहीं किया। अगर कोई प्लेयर डाउन है, किसी मिस्टेक हो रहा है, तो उस प्लेयर के साथ बात करके उसका मोरल पूरा कोचेस को ही देना चाहता हूँ, पूरा श्रेय। Thank you. That was a lovely insight into the camp. Sir, this season we obviously had a first season where there was a set team. Cut to season 2 again where we had the auction, the mega auction once again, and you had to formulate a new team once again. How difficult was that for you to kind of create a new team? But
you could manage to retain the core. So what was the rationale behind, what was the thought process before the auction? It was a difficult task to let go of people who you're close to first edition. But with professional teams, decisions have to be made. And then it was a new coach, so he had a new system. So the task for us as a management was to give him the team that he wanted. And the brief was very clear. Let's go with young blood because one will be eager to learn and they'll be eager to unlearn as well, right? So that was basically the brief. And again, like I said, it is a no-brainer to retain Pankaj, Mithun and Vinayak. So once that was set, like I said, it was an easy decision to retain the spine of the team. We had a setter, an attacker and the libero. So the rest of it was for us to, figure out. We had a certain brief, we had to go for blockers because foreigners were of a certain, category. And we went for a attacker and a universal. So our task was to get the Indian blockers. So we managed to do it. We managed to get the team that we wanted. And what do you see? So you managed to do it, and how is the is the answer? Pankaj bhai, ये एक season long, month long tournament होता है. How important for you as a captain? कैप्टन होने के बाद मतलब कितना important है ये पूरा players को motivate रखने के लिए for say 7 games and that too 3 cities में जो हो रहा है क्योंकि travel भी involved है एक मैच के बाद रेस्ट भी मतलब 2-3 दिन का ही मिलता है. सो मोटिवेट करने का क्या स्ट्रैटेजी या फिर टेक्निक आप इस्तेमाल करते हो? कैप्टन का इसमें काफ़ी रोल रहता है. राइट. किसी भी गेम में देख लो कैप्टन का काफ़ी रोल रहता है. तो वैसे प्रैक्टिस में तो उतना कैप्टन का जरूरत नहीं पड़ता है. इस टाइम तो कोच वगैरह सब कुछ वो देख लेते हैं. थोड़ा जो मैच में ग्राउंड में अंदर जो मैच चल रहा है थोड़ा कैप्टन का जरूरत पड़ता है. अगर कोई प्लेयर डाउन चल रहा है तो उसको थोड़ा मोटिवेट करना है. कोई मिस्टेक हो गया तो टीम को इकट्ठा करके उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना है कि चलो अभी हमारे से ये मिस्टेक हो गया, नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक नहीं करेंगे. लाइफ को चेकअप करना, प्लेयर को उसका मोरल अप करना. Right. Absolutely. So when the tournament starts, all the teams have just one goal, which is to make it to the semis first. What's the camp in the mood as of now, and can you explain this roller coaster of a journey to our audience? Oh. I'm sure the Bengaluru fans would want to know because it was a roller coaster. See, my job in the team is of the biggest cheerleader. I am just here to celebrate the talent. I'm just here to just be happy with what the boys are, and our task is to ensure that they're having fun because it's always about the journey and not the destination. Absolutely. Right? So wins, losses, it keeps happening, but at the end the task is to remain together as a unit, perform well, because absolutely trust the process. We can see what's happening in front of us. Players are having a lot of fun. In between things happen, and that's the whole task of the management to make things right and stuff like that. But apart from that, it's just a pleasure to be with such amazing talent, such athletic people. When passion's always high, emotions are always high. So it's crazy, right? So just let them be, and just help them with whatever you want. It is, like you asked, it is a task to keep everybody motivated during a bunch of losses, because I think that is when your true skills come into play, right? So that is again with the presence of David in the camp. That's also something that's taken care of, because everybody wants to perform for him. He wants to do his best for the team. So I think it's a very symbiotic thing. Absolutely. ये टूर्नामेंट एक बहुत बड़ा वॉलीबॉल का सेलिब्रेशन था. आप वॉलीबॉल का स्टैंडर्ड सब गेम्स ऑलमोस्ट देखे हो. आपको क्या कहना है ये टूर्नामेंट के बारे में? ऑलमोस्ट टिल टुडे वी आर बेसिकली इन द सेकंड लास्ट डे ऑफ द लीग स्टेज, और अभी भी हम लोग को पता भी नहीं है कि फोर्थ सेमीफाइनलिस्ट कौन है. सो वॉलीबॉल के स्टैंडर्ड के बारे में एज अ प्लेयर आपको क्या कहना है ऑफ प्राइम वॉलीबॉल? वो तो सबको ही पता है, इसका स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा हाई है प्राइम वॉलीबॉल लीग का, प्राइम वॉलीबॉल लीग का. इसमें
सभी प्लेयर अच्छा खेल रहे हैं, पूरा टीम अच्छा मेहनत कर रहा है, इंजॉय भी कर रहा है। मैं अपनी टीम की बात करूं तो हम टीम ने मतलब हमारे को अच्छा कोचिंग मिला है और कोचिंग के साथ साथ हमने इंजॉय भी किया है। जो हमने कम बैक किया है फर्स्ट 2 मैच के बाद, वो जो हमारे को मोटिवेट मिला है, जैसे राकेश सर बहुत एनर्जी दिलाते हैं हमारे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं ड्यूरिंग मैचेस, प्रैक्टिस में, कभी भी देखो हाँ फुल इंजॉय करवाते हैं। इसीलिए किसी प्लेयर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता हमारे, क्योंकि जब स्टाफ अच्छा हो तो फिर प्लेयर फ्री माइंड रहेगा, फ्री माइंड खेलेगा। एक फैमिली जैसा है। हमें बोला पहले ही बोला एक फैमिली जैसा है। आपने रिटर्न लेने का बात किया था ना, तो वही बात मेरे को अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा, कि मेरे को एक फैमिली की तरह लगता है। ये किसी भी टीम के ऊपर कोई प्रेशर नहीं रखते, कुछ भी नहीं। लास्ट ईयर भी सेम था, अभी तो और ज़्यादा अच्छा है। हाँ जी, तो लीग तो इसका स्टैंडर्ड तो काफी ज्यादा हाई है। गेम में भी रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब द प्लेयर्स आर इन अ गुड मूड, वो दिखाई देता है, लाइक व्हेन दे आर सेलिब्रेटिंग अ पॉइंट एज अ टीम। सो वही कंटिन्यू वही जस्ट टाइम आउट वगैरह होता है तो बहुत एनर्जी आता है इनसे हमारे को जो भी बाकी प्लेयर है हमारे, बहुत एनर्जी मिलता है। और जो आप इस लीग का बात करें, इस लीग से प्लेयर को तो काफी ज्यादा फायदा है, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा प्लेटफॉर्म है और जो नए प्लेयर के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसे कुछ नए प्लेयर है, हॉस्टल के प्लेयर है जो इस मैचेस को देख रहे हैं, कुछ लोग इधर आके देख रहे हैं, कुछ लोग टीवी पे देख रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। और मैं तो बोलता हूँ इससे काफ़ी ज़्यादा सीखें, क्योंकि इसमें काफ़ी बहुत सारे इंडियन प्लेयर भी है और फॉरेनर प्लेयर भी है, सभी अच्छे प्लेयर है। किसी न किसी से कुछ ना कुछ उनको सीखने को मिलेगा। एब्सोल्युटली। हाँ, ताकि वो अपने मतलब किसी को सीखे हो, अपना हॉस्टल में जाके कुछ प्रैक्टिस करे, मान लो किसी अच्छे प्लेयर को देख के उससे कुछ सीखे और अपने उस पर काम करे, गेम इम्प्रूव कर सकता है। तो वो भी आने वाले टाइम में इस लीग में आ सकता है, इस लीग का हिस्सा बन सकता है। तो मैं देखा हूँ काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैं अपने गांव की बात करूँ, मेरे गांव में वॉलीबॉल नहीं खेलता था, कोई भी नहीं खेलता था। ये लीग स्टार्ट हुआ, अभी पूरे 10-12 बच्चे लोग हैं, पूरा अपने ग्राउंड में नेट लगा के अपना खेलते रहते हैं। और मैं भी छुट्टी जाता हूँ, मैं उनके साथ खेलता हूँ, बहुत शौक है उनको खेलने। So that's the kind of stories that you want to hear from rising from India. But so he was talking about your role, about how you impact the team by being a non-player. I'm sure there are n number of sports enthusiasts in India who would want to be part of team or want to be associated with sports in general, but they aren't good enough to play the sport or have passed the age. But you can still contribute to the sport in so many ways. Absolutely. You as a general manager are contributing to them. So what would your message be to the viewers of India who would want to be associated, who want to get involved with sports but are not players? So how to do that, and how can they be, say, contributors to Indian sports in non-playing ways? So I think it's always the next best thing to be a player is being a fan, right? My message would be a fan, love what they're doing, always trust the players, because nobody goes there not wanting to perform. They always want to perform, and they also go through a lot of stuff just to be able to be on the pitch or the court and give it their all. So try to understand their psyche and believe in them, and always trust the process. And like I said, the sporting ecosystem of India is booming right now. We have tons of leagues right now, and just follow your instincts, follow it with all your heart, and someday you can always work. There are a lot of opportunities coming up, and it just has to, just be true to your craft and keep improving, keep learning, and then that's it. Right. Someday you can be back sitting. I wish everybody be better than me. He's just being very humble, but yeah, he's impacting the team in ways that even he's not realizing, and we also realize within our team, like we have a lot of people who kind of contribute in ways that even they don't realize. Absolutely. Pankaj bhai, before we end this conversation, जितना भी youngsters है इंडिया का, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? जो भी मतलब वॉलीबॉल खेलना चाहते हैं, स्पोर्ट्स टेकअप करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनके लिए मेरा ये मैसेज रहेगा, मैंने इससे पहले भी बताया था, जितने भी यंगस्टर है, चाहे किसी भी गेम का हो,
वॉलीबॉल का हो चाहे अदर स्पोर्ट्स का हो। वो अपना जो हॉस्टल में अपना प्रैक्टिस पे फोकस रखे ज़्यादा, और उनका जो फैमिली में रहता है, फैमिली से थोड़ा प्रेशर आता है। मान लो कुछ लोग वॉलीबॉल करना चाहता है, कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, तो उनका फैमिली में उनको कुछ लोग अलाउ नहीं करते, उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, बोलते नहीं तो पढ़ाई कर ले। राइट। वो पढ़ाई में चाहे बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो, उसको स्पोर्ट्स में शौक है, वो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, राइट। तो मैं उनके पेरेंट्स को भी ये बोलना चाहता हूँ कि जो उनका बच्चा करना चाहता है, रिसोर्स जाना चाहता है, उस वक्त जाने दें। मैं अपनी बात लेता हूँ, मैं वॉलीबॉल पहले नहीं खेलता, 9th क्लास में स्टार्ट किया, मुझे कुछ भी पता नहीं था। जब मैं स्टार्ट किया तो मेरा स्टडी तो मेरे को पता है कैसा था, तो मैं स्टडी को अपना साइड कर दिया, मैं पूरा फोकस वॉलीबॉल पे ही रख दिया अपना, क्योंकि अगर कुछ भी मेरे को मिलेगा तो वॉलीबॉल से ही मिलेगा। अगर मैं इस फील्ड में चला गया स्टडी में तो मेरे को पता नहीं कुछ नहीं मिलना था, और मेरे को मिला भी। बस मैं उनको भी यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना फोकस रखें अपने प्रैक्टिस पे, और अच्छे प्लेयर को फॉलो करें, अच्छे कोचिंग से ट्रेनिंग लें। अभी जो आप हॉस्टल लाइफ है, जितने भी यंग प्लेयर है, जो आप हॉस्टल लाइफ है, यूनिवर्सिटी जहाँ अकेडमी किसी में भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाद में आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि भाई हम उस टाइम में अगर अच्छा मेहनत करते तो हम भी आज यहाँ पे होते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ अभी से आप मेहनत करो कि बाद में आपको रियलाइज नहीं होगी, रिग्रेट नहीं होगा, बाद में फील नहीं होगी मैंने यहाँ पे ये चीज नहीं की, इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं पहुंचा हूँ। Right. I think that's a beautiful message to kind of end the conversation with. What would your message be to the fans of Bengaluru Torpedoes when they see you guys? I mean, we've done whatever we set out to, and there have been ups and downs. But we've always been true to the mission that we've always wanted to make Bengaluru and Karnataka proud, because Karnataka is a volleyball bastion. It's produced the biggest talents, like Ashwal Rai and Hari Prasad and Karthik and Vinayak, and there's tons and tons of players. I mean, and then a lot of legends before us. So every time we step out, it is always for the fans of Bengaluru, the people of Bengaluru, the people of Karnataka, and that will always be our thing, right? And whatever happens, we'll always keep having fun. We'll always, strive more to achieve greater heights, and also the promise to grow volleyball in India. That's a great parting message, and we wish Bengaluru Torpedoes all the best from Kolkata Thunderbolts on behalf of all of us at Kolkata Thunderbolts. Thank you so much, Rakesh sir. Thank you so much, Pankaj Bhai, for joining us today. You're watching Kolkata Thunderbolts. This is Priya Ghosh signing off. We will be back with a new video, guys. জিতবে বাংলা